जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था, यू कैन सी वी आर amongst nature here, and that's a peacock running through the garden, and it's actually running. It's getting scared of me and running, and now so I'll just let it be. Over the edge, feel like I'm floating through the air. So hello and welcome to yet another edition of the ID Fit training program. And if you guys were wondering कि मैं एक महीने से कहाँ था, तो मैं एक महीने से थोड़ा ब्रेक पे था because I was not feeling too well. I was suffering from a stomach infection, और एक बारी जब उससे मेरी रिकवरी हुई, so I got a elbow joint injury which was restricting my workouts. तो एक महीने से मैंने कुछ ज़्यादा खास वर्कआउट किए नहीं है, and I was also slightly off social media. I was not posting too much of stuff on social media, but now it's been a month and I'm feeling a lot better. And it's been a very hectic month for me because एक तो गर्मी बहुत थी and I was flooded at my workplace. So I was feeling a little bogged down, and just to get away from it all, I've come for a small break to Agra. So I'm right now in Trident in Agra, and it's a beautiful property. मेरे पीछे अभी क्योंकि अंधेरा हो गया है, शाम का टाइम है, you cannot see too much. I'll show you the entire property tomorrow morning. But I'm here for a small break, and after this, once I get back home to Delhi, I'll be resuming my workouts and my intense training. So I'm not going to wait for tomorrow. In fact, I'm going to start with my training from today itself. And let me just finish my coffee. I'll take you guys to the gym and we'll get a good workout in. And I've already seen their gym. It's not a very big gym, but it has decent machines on which I'll be working out. And because of my elbow injury, I'm not right now picking up too much of free weights. So I'm sticking to working out on machines. और आज भी मैं मशीन वर्कआउट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा. सो लेट मी जस्ट गेट डन विद माई कॉफ़ी एंड देन आई विल टेक यू गाइस टू द जिम एंड शो यू व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो आई एम डन विद माई कॉफ़ी और आई एम जस्ट पैकिंग माई जिम बैग. मैं घर से थोड़ा सामान लाया था जिम के लिए. आई एम कैरिंग माई वाटर बॉटल, सो इट्स टाइम टू हिट द जिम. लेट्स गो. Okay, so we are at the fitness center now. That is what it says on the board. So come in. And as expected, it's totally empty. जैसा कि normally 5 स्टार में मैंने देखा है, जिम होते हैं बिल्कुल खाली. And that is one of the prime reasons I love coming to these gyms and working out, because there is no one in sight. So it's like your personal gym. This actually looks like a personal gym also. Like I mentioned to you, it's not very big. The last gym I went to was at ITC in Jodhpur, जहाँ मैं last month गया था. That was much bigger than this. In fact, 2-3 गुना इससे ज़्यादा था size में. So like I said, the size of the gym doesn't matter. जो machines available हैं और मैं उनसे क्या workout कर सकता हूँ, that matters. So the first thing that I do when I come to such a gym is analyze the kind of machinery they have. And like I mentioned to you before, मैं already दिन में आके मैंने इनका gym check out कर लिया था. And in my mind, I already have a plan set for myself. And so what I'm going to do today is stick to doing the machine workout. और the good thing is that जब भी आप ऐसे जिम में आते हो, आप एक बारी मशीनरी देख लेते हो, आप अपने दिमाग में एक प्लान सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सरसाइज आप कौन से बॉडी पार्ट की कर सकते हो. और कई बार ये भी होता है कि अगर एक बॉडी पार्ट पे आप फोकस नहीं करना चाहते, यू कैन एक्चुअली डू अ होल सर्किट, लाइक अपर बॉडी सर्किट और अ लोअर बॉडी सर्किट. सो यहाँ पे जो मेरे को मैक्सिमम मशीन्स दिखी हैं जिस पे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, इज़ फॉर माई बैक एंड माई चेस्ट. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू डू अ स्प्लिट वर्कआउट ऑफ माई बैक एंड माई चेस्ट. काफ़ी टाइम से मैंने बैक की भी नहीं है, बिकॉज लाइक आई मेंशन आई हैव दिस एल्बो इंजरी. और जब भी मैं व्हेन आई पुल इट इफेक्ट्स माई एल्बो. सो आई एम गोइंग टू गो स्लाइटली लाइटर. आई विल ट्राई. मेरे लिए बहुत मुश्किल है हल्का वेट उठाना, क्योंकि इतने साल से मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और जब भी मैं हल्का वेट उठाता हूँ मुझे लगता है कि मैं आई एम नॉट डूइंग टू मच. So I'll see that it doesn't affect my elbow too much. I'll do a back and a chest workout, maybe 3 to 4 exercises of each body part. So let me just start with that. So before I start, I just saw something which reminded me of my gym back in Delhi, which is that the dumbbells are all scattered. Someone had a workout here before I came in,
एंड एज यू कैन सी डंबल सब जगह फैले हुए हैं, मेरे पैरों में भी आ रहे हैं. So this is something that I witnessed back home. It's a universal problem. So I would just like to tell everyone, अगर आप जिम जाते हो, किसी भी जिम जाते हो, कमर्शियल जिम जाते हो, 5 स्टार के जिम जाते हो, please re-rack your weights. It's a major problem for other people. You know, when you're stupid, it's not so much of a problem for yourself. It's actually people who have to sort of deal with you. So it's the same thing with this. कि जब आप ये सब छोड़ के जाते हो और इतना उनको रखते हो इस तरह से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप तो चले जाते हो. बट आपके बाद जो लोग आते हैं ना, दे फेस द प्रॉब्लम. सो डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी डम, re-rack your weights always. Okay. So I'm going to start my workout with wide grip lat pull down. और 5 से 6 सेट में इसके मारूंगा. फर्स्ट 2 विल बी वार्म अप सेट्स. उसके बाद आई विल ट्राई एंड गो एज हेवी एज आई कैन विद माय कीपिंग इन माइंड माय एल्बो. सो लेट मी जस्ट बिगिन. So अगर आपको भी मेरी तरह कोई इंजरी है या if you're going through a lean patch, the one thing that you can do is try and focus not too much on lifting heavy, but do more reps. So that's what I've been doing. जितने भी मैंने वर्कआउट किए हैं पिछले महीने में, जब जब भी मुझे ठीक लगा है, I focus more on doing reps, less on lifting heavy. I know for someone who is into lifting heavy stuff, it's a bit of a setback, but at least you're doing something. कुछ ना करने से कुछ करना better है. And that's what I keep telling myself, because you have to keep yourself mentally up. Physically अगर आप आपको setback लगा है, it's very important that you keep your mental जो आपकी conditioning है उसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है. So this is something that's helped me out. That if I cannot lift too heavy, I try and go heavy in my rep range. तो मैं अपनी rep range ऊपर कर देता हूँ और अपना जितना मैं weight उठा रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ. So this is actually quite a good machine, काफ़ी smooth है. और as far the weight start goes, I think I'll be able to lift all of it. Like I said, I won't be going heavy, but machines का बहुत फर्क पड़ता है. The machines I have back home are totally commercial machines. This is more of a home gym setup. तो इस पे आप multiple exercises कर सकते हैं. तो normally जो home gym setup होता है उसके जो weights होते हैं, they are not that heavy, because people don't tend to sort of lift very heavy during home workouts. So उसको मद्देनजर रखते हुए, but it's still a very smooth machine. Reps भी अच्छे निकल रहे हैं, weight भी अच्छा लग रहा है. अभी तक I cannot feel it on my elbow joint. This is the good part. So if things go like this, I think I'll be able to lift the whole stack. And like I mentioned, it's not a very big gym. अच्छा है, the good part is that it's empty. क्योंकि अगर यहाँ पे अभी 3 से 4 लोग होते तो थोड़ा सा वर्कआउट करने में इशू होता. And I'm anyway used to working out, with lot of cross ventilation. तो थोड़ा बंद है, AC चल रहा है, but still because the size is not big and there is no cross ventilation, थोड़ा सा I'm slightly having an issue with my breathing also. Because if you are used to working out कि fans चल रहे हैं, ओपन एयर आ रही है, पास कर रही है, और एकदम से आप बंद जिम में वर्कआउट करो तो यू कैन हैव इश्यूज विद योर ब्रीदिंग. एंड वाइस वर्सा आल्सो. इफ you're used to working out in the gym which is fully air conditioned all the time, उसके अगर आप ओपन जिम में वर्कआउट करोगे तो आपको एडजस्ट करने में 2-4 दिन लगेंगे. सो सेम थिंग अप्लाइज देयर. बट ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आई विल गेट मोर यूज्ड टू इट. So I'm all warmed up now, and before I take my next set, I'm going to change और थोड़ा सा I get more comfortable. So I'll just see you. So 3-4 set already मैंने ले लिए हैं. I think I'll do 2 more and then move on to the next variation. So this is going to be my second last set for lat pull down wide grip.
My last set of that pull down, and I'll try and go for 10 to 12 reps on this. जब भी थोड़ा हैवी सेट मारता हूँ उसके बाद आई मेक इट अ पॉइंट टू फ्लेक्स द मसल आई हैव जस्ट वर्कड आउट। तो जब बाइसेप कर रहा होता हूँ तो थोड़ी सी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता हूँ। इवन इन माई ट्राइसेप्स आई डू दैट, एंड इवन इन माई बैक, माई लैट्स, आई लाइक टू स्ट्रेच देम वाइड once I'm done with my heavy sets. तो क्योंकि अभी जैसे मैंने मेंशन किया था, आई एम इन अ फुली एसी जिम एंड थोड़ा सा छोटा भी है और जल्दी कूलिंग हो रही है, आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग आउट इन सच क्लाइमेट कह लें आप जो भी कह लो उसको, क्योंकि मैं ओपन जिम में वर्कआउट करता हूँ जहाँ पे फैंस आर ऑन, देयर इज क्रॉस्ड वेंटिलेशन, तो थोड़ा सा आई कैन फील की बॉडी जल्दी ठंडी हो रही है मेरी। तो सेट्स के बीच में भी मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट मूविंग माई सेल्फ, flexing my muscles so that I keep my body warm in between the sets. And one more thing that I am doing is I am staying hydrated. मैं खूब पानी पी रहा हूँ, already 2 बोतल पानी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। I am on to my 3rd bottle and maybe I'll have few more by the time I am done with my workout. So I am done with my first exercise. I did 6 sets of this and I am going to change the variation now, move on to doing some cable rows. और ये इस मशीन का मेरे को मैकेनिज्म बहुत अच्छा लगा, आई जस्ट शो यू। सो अभी हम इस पे बैठ के लैट पुल डाउन राइट कर रहे थे, इसी सीट को हम थोड़ा सा पुल आउट करेंगे और अभी हमारी सीटेड रोइंग का स्टेशन बन गया है। सो आई एम गोइंग टू सिट ऑन दिस, दे डोंट हैव दैट वी क्लोज बार, सो आई एम गोइंग टू डू इट ऑन द स्ट्रेट बार। स्ट्रेट बार पे मैं करूँगा। अभी तक ये करते हुए आई कुड नॉट फील इट ऑन माई एल्बो जॉइंट, होपफुली in the next exercise also it should not come, अगर आया so I have something for that, something that I've been wearing throughout my workouts। जितने भी मैंने वर्कआउट किए हैं हाल फिलहाल में, वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं उसको मोर और लेस पहन के रखता हूँ। अभी मैंने इसलिए नहीं पहना हुआ बिकॉज राइट नाउ आई एम फाइन, बट आई टेंड टू पुट इट ऑन इन बिटवीन माई वर्कआउट्स। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। So I'm ready to do my seated rows. I put the attachment, so let me just do my first set on this. That was nice. So normally in my gym I use the V bar grip, और यहाँ पे वो हमारे पास नहीं है तो हम straight bar पे ही करेंगे। So I'll again do 4 to 5 sets of this before moving on to my next variation. So lat pull down करते हुए तो I could not feel anything on my elbow joint, but during this exercise मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे strain feel हो रहा है। So I think before I take my next set, जो मैं आपको भी बता रहा था, what I put on my elbow for support, I'm going to take that out and wear it because I cannot afford to miss any more workouts or be on a longer break. So let me just do that. So this is what I wear during my workouts. And this has been with me since my cricket playing days. जब मैं क्रिकेट खेलता था कॉलेज टाइम में, तब से ये मेरे साथ है। And I used to wear this, normally फील्डिंग के टाइम पे हम पहनते थे इसको,
बट ये अब जब से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की है, जब भी मेरे को एल्बो पे स्ट्रेन आता है या इफ आई एम फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ excess weight during heavy bench pressing or heavy shoulder pressing, this is what I like to wear to support my elbow joint, and this has come in handy during my injury also. अभी पिछले 1-1.5 महीने से even when I've been at the gym not working out but training other people, so I've been continuously wearing this, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है because it keeps the muscle warm. So जब मैं घर पे होता हूँ I am continuously icing my elbow, तो मैं ice pack यूज़ कर रहा होता हूँ, but during work when I'm training others, it's not feasible for me to carry ice packs with me and keep on putting them from time to time. So I wear this for support. It keeps my muscle warm, so when I go back home then I can apply the ice packs. अब मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से ट्रेनिंग आपको शुरू की है. I've been wearing this and it actually comes in handy. आजकल इसके बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं, मॉडिफिकेशंस आ गए हैं. You get ones which have a strap on it also, but I prefer wearing this. This is also in terms of my muscle size, it fits me perfectly. So इसमें आपको ये देखना चाहिए कि it should not be very tight and it should not be loose, क्योंकि loose होगा तो it will not help your muscle, sorry, and if it's really tight तो ये आपका जो blood flow है जो आपके muscle में होता है, it will constrain it. So it should not be too tight or too loose. This is just perfect for me. So let me take my next hit with this one. तो अभी नॉर्मली वी बार में जो होता है व्हेन यू टेक इट बैक इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती है एल्बो पे, बट इसमें ऑन स्ट्रेट बार विद द स्ट्रेट ग्रिप इट्स गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट माय एल्बो अ बिट, सो मे बी दैट्स आल्सो व्हाई थोड़ा सा स्ट्रेन इस पे ज़्यादा आ रहा है. So I'm going to take my last set of this and उसके बाद I'll change the variation. 5 सेट इसके हो जाएंगे, 6 सेट मैंने lat pull down के किए हैं. So I'm already done with like 11 sets. Feeling pretty warmed up, feeling nice. थोड़ा सा elbow पे आ रहा है, but that's alright. That's just part of the job. So I've put the attachment, मैंने थोड़ा attachment को चेंज कर दिया है, seated से इसको मैंने ऊपर लगा दिया है, and I'm going to do close grip pull down. Again, since we don't have a V bar, it's going to be on the straight grip. और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, I really like this machine. This is the kind of machine I can actually think of putting in my home, in my backyard, because ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेर रही है और एक मशीन में आप काफ़ी सारे स्टेशन इसमें आप बना सकते हो. So basically it caters to your back, your chest, your shoulder, your legs. It covers everything. So it's a good investment. Maybe right now in the coming future I can actually think of putting one in my backyard, because with this whole pandemic situation we've already seen 2 साल 3 साल जिम बंद रहे हैं, and if you have something like this at home, अभी तो मैंने अपने बैकयार्ड में काफ़ी जुगाड़बाजी से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं, but this will actually make my life a whole lot simpler. So with that, let me take my first set. इसको सीट को मैं वापस अरेंज करूँगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा. So yeah. So I don't know whether it's the angle or it's something else, but ऊपर से जब मैंने lat pull down में किया है और close grip पे किया है, it's not coming so much on the elbow. Seated rowing में थोड़ा सा I could feel it. So I'll take maybe 4 sets of this, and then let's see what we do next.
So before I take my next set, I want to say something about rehab and how to deal with your injury. मैं almost 15-20 दिन से भी ज़्यादा I was out of action. I was not working out at all. पहले I was dealing with my stomach issue, the stomach infection. उसके बाद थोड़ा ये elbow का pain शुरू हो गया. But throughout, I just kept telling myself to not be in a hurry to get back, because over the years, over a period of time, I've realized जितना आप हरी करोगे उतना आपको mentally you will be unsettled, and physically if you hurry it up before you are fully cured, you will relapse, and then it will take you even longer to get back to your regular workouts. So now whenever I get injured, see, everyone gets injured when you are younger, when you're 20, 22, 25, आपकी बॉडी ऐसी होती है आप थोड़ा जल्दी रिकवर करते हो, बट तब आपका माइंड इतना you're not so mature to understand. उस टाइम आपको बहुत जल्दी रहती है, बिकॉज यू फील कि यार मैंने इतनी मेहनत करके इतने गेन्स किए हैं जिनमें वॉट एवर प्रोग्रेस हैव मेड, इफ आई डोंट हरी बैक आई विल लूज ऑल दोज गेन्स. बट एज यू मेच्योर, यू गेट ओल्डर, यू अंडरस्टैंड दैट इतनी आपने अगर मेहनत की है, इट डजंट गो डाउन द ड्रेन सो क्विकली, इट टेक्स टाइम. So it might take a month, 2 months before you start losing muscle or you start losing muscle mass. So don't hurry it up. अगर आप जल्दी करोगे, relapse करोगे, आपको और टाइम लगेगा fully वापस आने में. तो जब भी आपको इंजरी हो, take your time, eat well, rest plenty, और जिस भी बॉडी पार्ट पे मसल पे आपको इंजरी है उसका आप ख्याल रखो. अगर एक्सटर्नल इंजरी है, आइसिंग करो, टेक मेडिकेशन, apply all the gels that you have. Internal injury hai, go see a doctor, whatever he prescribes, do that. So take care of yourself, because you just have one body, it's like your home, and you need to take care of your home. और कोई नहीं करता. आपके घर की जो सफाई है, जो मरम्मत है, आपको खुद ही करनी है, उसके लिए आप किसी को रख नहीं सकते. So that's the thing with your body. Unlike your actual home where you can actually get people to clean it up, cook you food and stuff, with your body no one does that. People can just tell you, doctors can prescribe things, you can take medication, but ultimately करना आपको पड़ता है, which I have realized over the years. So you better take care of it, otherwise there is no point of spending so much time and effort in the gym. So for the next time when you feel that you're not up to it, just give yourself some time to heal mentally as well as physically, like I have. Slow controlled contractions is what I am focusing on today. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं मार रहा, वेट थोड़ा कम मार रहा हूँ, रेपिटेशंस पे फोकस कर रहा हूँ, और स्लो मोशन में अपने सारे सेट्स ले रहा हूँ. कोई जल्दी जल्दी में बॉडी को आगे पीछे खींच के सेट्स नहीं मार रहा. एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी, irrespective of how much weight you are lifting. Even when I am doing full racks, like you've seen in my previous videos, I make sure that I am fully in control of the weight, and the weight is never in control of me. So अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा रैक मार लेते हो, बट अगर आप कभी अपनी वीडियो बनाओगे या अपने आप को देखोगे मारते हुए, तब आप समझोगे कि आपका फॉर्म सही है या गलत है. क्योंकि there are a lot of people who do full racks but their form is shit. It's absolutely shit. And there are so many people जो शायद फुल रैक नहीं मारते, उससे थोड़ा कम मारते हैं, बट वो इतना अच्छा फॉर्म मारते हैं कि वो वेट भी उनको फुल रैक से ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. And they end up having a better body and making a better physique than people who can actually lift full racks and lift lot of weights. And I see this quite often in the gym. लोग वेट मारने में बहुत फोकस करते हैं. मैं 30 किलो का डंबल मार लेता हूँ, मैं 35 का मार लेता हूँ, और जब वो मार रहे होते हैं तो पूरी बॉडी उनकी जर्क मोशन में चल रही होती है. तो वो आपकी ना चेस्ट डेवलप कर रहा है, ना वो आपका बाइसेप बना रहा है, ना आपका शोल्डर, कुछ नहीं बना रहा. वो सिर्फ आपकी ईगो बना रहा है, आपकी ईगो बूस्टिंग कर रहा है. दैट्स अबाउट इट. So it will not take you anywhere in life. I'm pretty much done with this variation. I did 4 or 5 sets of this. I've stopped counting. अब मैं इसको change करूँगा. I'll move on to the next variation. And जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था that I'll try and do back and chest today, but I don't think with my current situation I should be doing chest. और वैसे भी after 2 days it's going to be my full chest day. आज मैं बैक मार रहा हूँ, कल मैं वापस जाके लेग्स मारूंगा, and the day after it's going to be chest day for me. So anyway, it doesn't make sense for me to do chest एक दिन के gap में. So maybe I'll just do back, and to finish my workout I'll just try and do some triceps. I want to check
if while doing tricep does it impact the elbow or not. तो थोड़ा सा बैक वर्कआउट खत्म करने के बाद एल्बो की टेस्टिंग करेंगे ट्राइसेप मार के, और उसके बाद आज के लिए बस कर देंगे, बिकॉज यू नो दिस इज लाइक आई मेंशन नॉट लाइक माय फुल वर्कआउट विद फुल इंटेंसिटी जो मैं करता हूँ. दिस इज सपोज टू बी मोर ऑफ अ टेस्टिंग वर्कआउट टू सी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में कितना कितना इम्पैक्ट आ रहा है एंड व्हाट आर द एक्सरसाइज दैट आई एम सपोज टू डू हेयर ऑन, और कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मैं यू नो आई नीड टू अवॉइड. सो विद दैट लेट मी टेक माय नेक्स्ट वेरिएशन. So my next variation is again going to be the wide grip pull down, but you know behind the neck. And there are two ways of doing this. और उसमें भी ना apparatus का बहुत फर्क पड़ता है. जैसे कई बार मशीन के आगे जगह कम होती है, तो then it makes sense to face the other way around and then do it. But यहाँ पे there is ample space in the machine to put my knees ahead. So I'm going to try and do it facing this way. अगर if it doesn't work out, then I'm going to change my direction. So at least for my first set, I'll do it facing inwards. So see, a lot of people feel and say that this is a banned exercise. I don't think it's a banned exercise. The only reason why people say this is because you know a lot of times when people are doing this exercise, they move their neck a lot, and it can actually cause you know major injuries to your spine. So अगर आप इसको ढंग से करते हो जैसे मैं अभी कर रहा था, by positioning yourself in a way that your neck is not moving and you know there is no such movement while doing it, then this is absolutely you know fantastic exercise for your outer lats. तो आपको अगर अपने लैट्स ग्रो करने हैं वाइड, उनको स्प्रेड करना है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. मैं करता हूँ, पिछले 15 साल से करता आया हूँ. कोई मेरे को नेक में इशू नहीं है, कहीं पे कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू डू इट इन द राइट पोजीशन. बिकॉज अगर आपकी नेक मूवमेंट रहेगी और आप इस पर हैवी मारोगे, आपको सर्वाइकल भी हो सकता है. यू कैन एंड अप यू नो इंजरिंग द बैक पार्ट ऑफ योर नेक, विच इज़ अ वेरी बैड इंजरी टू हैव. सो मेक श्योर either way while facing out or facing inwards, you're not moving your neck. So I'll just give you a demo of how to do it the other way around. In my next set, I'll change my position and just show you. So अगर आप सामने मार के देख रहे हो, तब भी you make sure you are positioned in a way that your neck is not moving. So straight up and straight down, the very same way जैसे कि आप behind the neck barbell press मारते हो for your shoulder, वो भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसपे काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि बैंड है, बट वो कोई बैंड एक्सरसाइज नहीं है. The only reason why people want to put that fear in your mind is so that you don't injure yourself. तो behind the neck shoulder pressing भी आप जब मारते हो, there should be no movement of your neck. Keep your neck straight and then just lift. So yeah. So that was my last set of the behind the neck variation of the lat pull down. और 4 वेरिएशन मैं कर चुका हूँ. आई ऑलरेडी डन विद लाइक 20-22 सेट्स ऑफ माय बैक वर्कआउट एंड लाइक आई मेंशन आई एम गोइंग टू स्टिक टू द मशीन. मैं अभी फ्री वेट्स पे नहीं जा रहा, ऑल्दो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ फ्री वेट्स है, वी हैव लॉट ऑफ डंबल्स और अच्छे वेट के डंबल हैं, सो आई कैन एक्चुअली डू सिंगल आर्म रोइंग, बट वो मैं अभी नहीं करूँगा बिकॉज आई डेफिनेटली नो दैट इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय एल्बो and they don't have a barbell for doing rows, and that is again something that I'm going to avoid for the time being. Even when I get back to my full workouts, they're going to be more machine based. और अभी जैसा कि गर्मी काफ़ी है and usually during summers the workouts I do जो मैं आगे करवाता भी हूँ ज़्यादा मशीन बेस्ड ही करवाता हूँ बिकॉज उस पर यू नो यू कैन एक्चुअली पुश योरसेल्फ. तो आप ज़्यादा रेप्स मार सकते हो. यू हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस दैट यू कैन डू ऑन द मशीन्स. फ्री वेट्स में विंटर्स में प्रेफर करता हूँ ज़्यादा मारना और आगे लगवाना.
तो विंटर्स में जो मेरी ट्रेनिंग रहती है दैट्स वेरी हेवी, और आगे भी जितनी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ उसमें देयर इज लॉट ऑफ बेंच प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स. So we have done with that during winter. Summer is the time to focus on the muscle definition, maybe to cut down a little bit, because a lot of people want to lose weight, want to lose a little bit of their excess muscle mass. So this is a good time for that, and for doing so, machines are the best options. तो अभी जो नेक्स्ट 1-1.5 महीने के मेरे वर्कआउट्स रहेंगे, जब तक बारिशें अच्छे से आती नहीं है, खुल के नहीं आती, वो ज़्यादा मशीन पे ही रहेंगे. और मैंने शुरू में कहा था that I'll be doing a little bit of chest, but I think I should call it a day, because मैं काफ़ी टाइम बाद एक फुल वर्कआउट कर रहा हूँ and I'm feeling pretty good right now. I did all the exercises I wanted to do in the back. एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा before finishing. I'm going to try out doing some triceps on this, because this looks like a good machine to do it on. इसका वेट बहुत स्मूथ है और हाइट भी इसकी परफेक्ट है. So I'll just do a few sets of cable push downs on this. So I'm going to start with my tricep push downs. और नॉर्मली जो मेरे पास मशीन है बैक होम, उसमें इतना ऊपर से नहीं मैं मारता ट्राइसेप, बट क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ मशीन है तो थोड़ा सा हाइट इसकी ज़्यादा है, बता सकते हैं. तो अभी एक ही सेट किया है, बट ठीक है. आई एम फीलिंग क्वाइट गुड अबाउट दिस. आई थिंक आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फॉर द टाइम भी. थोड़ा इसके बिना करके देखूंगा कि आ रहा है कि नहीं. सो कपल ऑफ सेट्स एंड देन आई विल बी डन फॉर द डे. सो इट्स ऑलरेडी प्रीटी पम्प्ड. एक मार के, क्योंकि इतने दिनों बाद किया है तो मसल भी काफ़ी दिनों से इट वाज वांटिंग टू बी पम्प्ड. एंड लेट्स डू दिस. सिर्फ 8-7 सेकंड के लिए लो. So I guess कम वेट पे reps मारना for me right now is the best option, क्योंकि that's not affecting the elbow, and this is where the pain is. It's not at the tricep or below it. जहाँ पे joint है, बिल्कुल joint पे is where it hurts. So for the time being, I'm going to stick to doing more reps at lighter weight, and I'll do few more sets of this, and that will be my workout for today. And like I mentioned to you before, this is just one aspect of it. I'm pretty happy with the gym. थोड़ा सा छोटा था, but क्योंकि मैं disturb नहीं हुआ, I added to myself, so I'm pretty happy. You can see the chest machine which I would have done, but I have a very similar machine back home, so it's not something that I would miss out on. जो जिम पे मेरे मशीन है वो exactly ऐसी है, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि ये thin loaded है, उसमें हम plates लगाते हैं. तो I'm going to get back to my gym on Tuesday and hit chest there. Incline, flat, decline तीनों हो जाते हैं इस पे, like the one I have back home. So this is something which was slightly new for me. मैं in fact gym में भी going forward I would want to put a machine in which you have both lat pull down and seated rowing, because the only reason is कि ये जगह कम खाती है. मेरे पास अभी जो machines हैं वो दोनों अलग अलग स्टेशन हैं, which is fine for the time being, but tomorrow if I want to add more machines, this is a good option because it takes up less space. So all in all, it's a pretty decent gym. If you ever come to Agra, you come to Trident, this is what the gym looks like. You can come here, have a workout. I've already shown you a couple of exercises that you can do. उसके अलावा you have a leg station on which you can do leg extension and leg curl.
and then you have the dumbbells. You can do walking lunges, dumbbell squats, elevated calf raises. तो आप एक अच्छा वर्कआउट बना सकते हो. They have a multi bench also. इस पे भी आप चेस्ट की सारी एक्सरसाइज कर सकते हो. बैठ के आप शोल्डर प्रेस कर सकते हो. You can have a good chest workout, you can have a good shoulder workout, a good back workout, and a good leg workout. And obviously, because there are free weights, you can obviously do your arms. So all in all, I would rate this gym, 3.5 out of 5 for its ambience, for its space, and for the equipment. So that's it from me for right now. Tomorrow morning when the sun comes up, I'll take you where I'll be having my breakfast. I'll show you around the property कैसी दिखती है दिन में, और यहाँ से भी हमारा जो व्यू है, बिकॉज अभी आप देख सकते हो बाहर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली ब्लैक दिखेगा. It's night time, you cannot see anything outside, but during the day you have a lovely view outside. So I'll just show you that view in the morning. So for now, I'll take your leave. It's time for me to go rest up, maybe eat something, and then just enjoy myself. So thanks. So welcome back, and it's a brand new day, and I just woke up, and this is the view that I woke up to. This is the view from my room. You can see some really pretty willow trees right in front of me, and since it rained last night, they look even prettier. So and this goes on. ये जो garden view है हमारा, काफ़ी इनके the gardens are quite expansive, and they just keep going on and on. So this side be, and on both the sides. So yeah. So I'm going to quickly change now and then head to the breakfast area. So I'll see you there in some time. So I'm going to the breakfast area now, and I'll also show you the pool along the way, जिसमें कि काफ़ी लोग हैं. So not the ideal time to be in the pool, at least not for me, because I like my privacy. So maybe जब थोड़ा सा खाली होगा, that's when I'm going to use it. So in the meantime, I'll head over for some breakfast, and I think since I've shown in all my previous food vlogs that it's the most important meal of the day for me, so I thoroughly enjoy my breakfast, and I'm going to just do that right now. So I'll see you at the breakfast table. So hello and welcome back, and मैं breakfast करने आ गया हूँ. This is what my typical breakfast looks like when I'm on a holiday, and if it was up to me, I would actually have a similar breakfast every day at home. But I try to have एक करके, जैसे एक दिन फ्रेंच टोस्ट ले लिया, एक दिन एग्स खा लिए, एक दिन पैनकेक्स खा लिए, एक दिन सॉसेजेस खा लिए. तो मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ. बट व्हेन ऑन अ हॉलीडे, स्पेशली आफ्टर आई हैव डन अ गुड वर्कआउट द लास्ट नाइट और द लास्ट इवनिंग, I tend to eat all of them together like I will today. So I'll see you after the breakfast. I'll show you the rest of the property. In the meantime, let me just enjoy my breakfast. So I'm done with the breakfast, and as I told you last night, I'm going to show you what the gym looks like in the morning. जो gym से view है हमारा, वो काफ़ी अच्छा है. So I'll just show you what that view looks like. So this is where we were last night, and so we are back in the gym. और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सुबह के टाइम यहाँ पे the view outside is really nice. I'll just show you the view. हम रात को वर्कआउट कर रहे थे, and you could not see anything outside, but this is what you get to see outside the window when you're in the gym, and it's very pretty. You can see hammocks there, and this is what the gym looks like in the morning. और अभी भी रात की तरह खाली है. I don't plan to do another workout because I did a pretty decent one last night, और थोड़ा सा tired भी हूँ, and I think I'll just take it easy before I have to head back home. So this is a quick look at the gym during morning hours. And this is the outside view, जो अभी मैं आपको अंदर दिखा रहा था. बाहर से कुछ ऐसा दिखता है. So I'll just show you the garden area, which is quite expansive, quite large. और यहाँ से शायद हमारा रूम भी दिख जाएगा. I'll just take you to my room from the outside. उससे पहले I just want to show you this one part. So ये सिर्फ एक garden area नहीं है इनके पास. This is just one part of it. They have a separate area which they use for group activities like बच्चों के खेलने के लिए. If you can see बीच में there's a cricket pitch also, so you can actually come here and play cricket, and this goes on and on. So like I said, it's a pretty large property,
and very well maintained. Especially the gardens are very nice and lush green. कल बारिश भी हो रही थी. It would not have made sense to shoot during the rain क्योंकि काफ़ी hazy आता सब कुछ. But आज काफ़ी clear दिख रहा है and it's a very nice and I won't say sunny. It's not sunny, but it's a very open day. काफ़ी आसमान साफ है, खुला हुआ है. You can hear the birds also. In fact, I could see some peacocks here also. So there's lot of nature around and great place to relax. And I think I see something on which I'm going to lie down for a few minutes before I take you any further. So I'm just going to take a quick break and be on this hammock for some time. So I'm done with my quick nap and it was very refreshing. So now I can take you further before I hope I don't fall while getting up. I didn't fall when I got on it, but anyway, so this is how you get up from a hammock. So let me show you the rest of the property now. जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था, you can see we are amongst nature here, and that's a peacock running through the garden, and it's actually running. It's getting scared of me and running, and now, so I'll just let it be. Just wanted to show you all the beautiful nature that's around us. So I'm up and about once again, and I think this is like one end of the property. यहाँ पे I think property खत्म हो रही है. Yes, I can see my car from here. So this is where the property ends, and आपको मैं थोड़ा सा इनका जो main area है from where we got in, I'll just show you that quickly. So yeah, so that's the main area from where you go in, and इन्हीं में एक मेरी गाड़ी भी खड़ी है. So yeah, actually यहाँ से you get to see the full कि कितनी वास्ट प्रॉपर्टी है. आपको यहाँ से एक बार ही दिख जाएगा. Let me just show you. So this is looking more like a garden right now, but you can see the structure of the property also. So that's how wide, broad, whatever you want to call it, but it's huge, and I've just shown you one part of it. I think that's about it, because it's more of the same thing on the other side. There's no point of repeating. So yeah, so I'm towards the end of my vlog, and I hope you enjoyed this whole vlog. And my stay at the Trident Agra was absolutely fantastic. I had a good workout, I had a good breakfast. I showed you the property. It's really pretty and nice, and this is actually the view I showed you from my room. So मेरे room से जो मैंने आपको सुबह view दिखाया था, this is that view. These are those trees. So I'm going to spend some time here amongst nature with the peacocks before I head back home. And since I'm up and running once again after my little injury scare and whatever issues I had, so you will be seeing more of me shortly. So stay tuned and subscribe to the channel if you already haven't, and share this video with your friends and family. I'm pretty sure they'll like it. So thanks again for watching, and I'll see you soon.